Hi friends, welcome to Your Careers. I'm Pervin Malhotra, and in this episode Zubin and I will be discussing the pros and cons of a career in law. But before we proceed, don't forget to like and subscribe to our channel so that you are kept informed of all the new videos, interesting ones that we will be putting up on YouTube subsequently. For a class 12 student to decide on embarking on a 5-year course and thereafter a career in law, what are some of the skills, attributes and abilities they should possess in order to be sure that they are at least cut out for the course? देखो, जब बच्चे घर में माँ बाप के साथ बहुत आर्ग्यू करते हैं ना, तो माँ बाप, मेरे भी मदर हमेशा यही कहती थी कि तू तो लॉयर बन जा, और आई यूज्ड टू से द सेम अबाउट यू, you know, but सिर्फ आर्ग्यू करना is not a qualification. Yes, it helps. इसके अलावा you have to have a logical, analytical mind, एक कीड़े जैसी attitude to go into the, you know, बाल की खाल of things. You know, things are very different. A case is very different from what seems on the surface and what lies underneath. तो वो एक पॉइंट निकालना जिससे आप अपने क्लाइंट को ट्रिप अप कर सकते हैं. इसके लिए यू हैव टू बी लाइक अ रिसर्चर and not just study law, not only should you know the various laws, acts, rules, but you have to be a lifelong learner. क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें आती हैं, पुराने लॉज और एक्ट्स चेंज हो जाते हैं, रिडंडेंट हो जाते हैं, नई चीज़, नए डेवलपमेंट्स, नए जजमेंट्स वगैरह. तो यू हैव टू हैव अ वेरी कीन आई फॉर लर्निंग, रीडिंग. आपके यू नो योर प्रेजेंटेशन एंड कॉन्वर्सेशनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप में जिगरा होना चाहिए, इंटिमिडेट नहीं होने चाहिए अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो. और बारीकी में जाने की एक जो स्किल है, ये स्किल आपको डेवलप करनी है. कंसंट्रेशन, पेशेंस and confidence, absolute confidence. Even if you are on shaky ground, what you have to present is absolute cool and confident persona. So these are some of the things, and of course you have to have thorough knowledge of your field so that you can appropriately guide your client. Otherwise आप उसको फांसी के फंदे पे लटका सकते हो या make him lose a whole lot of money, whether it's taxation or whatever. So you have to know your field like the back of your hand. So the traditional way that students entered the field of law was they did their graduation and then did a 3-year LLB. We now, of course, for several years now have had an integrated 5-year LLB program in which a student gets locked into after class 12. So what are the pros and cons of taking either of these two routes for a student? How should a class 12 student decide whether they can commit to this 5-year program, or should they do a graduation and then look to do the 3-year LLB? See, since a 5-year law course is available, obviously it's a better option as compared to doing you know, a course of 3 years after your graduation. However, that is true only if you're very sure that you wish to pursue a career in law, because it's a 5-year stint. All right, not many colleges and certainly not the national law universities offer a stepping out option after class after 3rd year. You know, some colleges do. So in that case, you know, if you find that after 3 years it's coming out of your years, you can step out with a normal graduation degree and pursue something else. However, if you're sure that law interests you and whether you wish to practice it or whether you wish to have it as a background, in that case I think a 5-year law degree is certainly better. Now, the admission procedure is pretty much standard for admission into a law program, whether it's the 5-year or the 3-year. There's an entrance exam. The National Law Institutes, all barring one, use the CLAT, as do the one in Delhi. The one in Delhi. Most other government or private law institutes typically have their own entrance exams. So the question there is that what happens if a student doesn't get into
a well-ranked or a well-regarded law program at their first attempt, what should their approach be? Should it be that they completely drop a year, take admission into some other course, retry for the CLAT and other entrance exams, or take admission into whichever law college that they are getting into and then retake these entrances? I don't think there are easy answers, but let me tell you, there are more than 23 national law universities themselves. So, okay, you didn't get into number 1 or number 2, you could get into number 9 or number 15, it doesn't matter. That's one. You also have to take a call in the sense that suppose you took the CLAT, you prepared for it, you took the CLAT and you missed it by a whisker. In such a case, maybe you could give it another shot next year, but even then I would suggest take admission this year, and in the overall scheme of things, yes, it might matter in your first assignment कि आपने कहाँ से किया, लेकिन उसके बाद कोई लॉयर को कभी पूछता है कि भाई आपने कहाँ से लॉ किया, कौन सी कॉलेज से किया, जैसे कोई आर्किटेक्ट को नहीं पूछता, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर को नहीं पूछता, किसी को नहीं. इट इज़ आफ्टर दैट, इट इज़ योर ट्रैक रिकॉर्ड, योर रेप्यूटेशन दैट विल गेट यू बेटर एंड बेटर केसेस. It will be interesting to also let our viewers know that law is one of those few rare careers where typically you don't have to necessarily do a master's degree in order to flourish in the field and continue. So, but one of the other questions that we often get from students and parents and that we hear about is specializations. Yes. There are innumerable, of course, there's civil and criminal and constitutional, and now we have things like cyber and intellectual property rights, environmental, etc. The question here is that when does a student decide on their specialization? Is this something that they do within the law school curriculum itself, or is it upon completing and the work they actually get into? See, when you are studying law, first of all, law is a generalist degree, okay, your LLB. You are, in the course of your study, you are familiarized with all the various things, right? All from A to Z, जो भी law के specializations हैं, 30 plus, maybe more, 35 by the time you pass out. तो आपको उनके बारे में थोड़ा पढ़ाया जाएगा. लेकिन जब आप LLB डिग्री से निकलते हैं, तब आप कोई भी चीज़ में मेजर नहीं करते. कॉलेजेस ऑफर करती है अपना डंका बनाने के लिए, लेकिन फाइनल सेमेस्टर में यू कैन चूज़ कि मुझे क्रिमिनल या कॉर्पोरेट वगैरह बनना है, लेकिन LLB डिग्री एक जनरल डिग्री होती है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता. स्पेशलाइजेशन आप प्रैक्टिस करते करते स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, और शायद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना है, LLM करना है, तो वहाँ स्पेशलाइजेशन होता है अगर आप करना चाहें तो. जो LLB डिग्री है, BA LLB डिग्री जो क्लास 12 के बाद और LLB डिग्री जो ग्रेजुएशन के बाद, दोनों डिग्रीज़ में स्पेशलाइजेशन होता नहीं है. हाँ, आप फाइनल सेमेस्टर्स में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के तौर पर इनको ले सकते हैं, बट दैट डजंट मेक यू अ स्पेशलिस्ट कॉर्पोरेट लॉयर और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर एट ऑल. you will study, you will be familiarized with all of these, and then जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे वगैरह, तब आपके अंदर अपने आप से घंटी बज जाएगी. Speaking of the course, let's hear about a typical 5-year course structure from a faculty of Manav Rachna University. Law is one of the oldest professions. It is also one of the most contemporary ones. To my mind, law is an evergreen profession. Law is all about rules, regulations, and norms for the human conduct. There are so many in numbers that one can't possibly remember all the laws, all the rules and regulations which govern a particular country. But what one can, however, do is to learn the skill to find and apply law. And that's the reason we suggest our students to focus on acquiring certain skills while they are studying law and learn the principles of law. The skills which a student must focus on acquiring include analytical abilities, critical thinking, communication skills, command over the language, reading, writing, and most importantly, public speaking.
The interesting thing about these skills is that they are not innate in nature and they can be acquired through knowledge. At undergraduate level, there are generally 3 programs which are very popular among students and which are offered by all the leading universities and law colleges in India. These are BA LLB, BBA LLB and BCom LLB. All the 3 programs are integrated in nature and interdisciplinary in approach. While I talk about interdisciplinary in nature, it means law and non-law subjects are taught alongside till up to 3rd year and are taught from the perspective of law and legal issues. By integrated, I mean BA LLB, wherein humanities subjects are taught along the law subjects. In BBA LLB, management subjects and BCom LLB, commerce subjects are the focus along with law subjects. Part of the pedagogy is experiential learning, which comes from participating in moot court exercises, moot court competitions, debating competitions, legal aid and awareness camps, clinical and procedural subjects. Law, to my mind, is a public profession and knowledge-intensive occupation. To make a successful career in law, one must have passion for law, compassion for people, and perseverance to excel. Thank you. एक और गलतफहमी जो होती है कि लॉ सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हैं, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी लॉ में एंटर कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी उनके लिए ओपन है और बहुत बढ़िया भी करते हैं। एक और छोटा पॉइंट, 95% जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स हैं वो BA LLB का खिताब रखती हैं। पहले 2.5 से 3 साल ज़्यादातर आपके ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के कोर्सेज होंगे जो आपके BA कोर्स के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आप अनेक सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के अराउंड। एंड जैसे मैम ने कहा, रीडिंग टिपिकली आपको हर दिन 50 से 100 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। तो आपकी एक रीडिंग स्पीड, एक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। जो एक और सवाल आता है कि चलिए मैंने लॉ का कोर्स कर लिया, मैंने ट्राई भी कर लिया 1-2 साल काम करके, ना तो मेरे को लिटिगेशन करना है, ना एडवाइजिंग या कॉर्पोरेट लॉ करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस होते हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए? बहुत ऑप्शंस होते हैं। मैनी स्टूडेंट्स तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग जुडिशरी में भी जाते हैं। You know, after all, LLB is a minimum qualification for taking the entrance exams for the judiciary. Judges की acute shortage है। You know, हमारे देश में delivery of law is moving on bullock cart speed because हमारा judge to population ratio बहुत ही कमज़ोर है। तो जजेस की बहुत ज़रूरत है, तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं। इसके अलावा we require, you know, knowledge of law is an asset क्रॉस डिसिप्लिन्स। आप मैनेजर बनने जा रहे हो, आप अपना बिजनेस करने जा रहे हो, नॉलेज ऑफ लॉ हमेशा एक लिटिजियस सोसाइटी जो बार बार में लड़ पड़ती है, झगड़ पड़ती है, उसके लिए नॉलेज ऑफ लॉ होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको प्रैक्टिस, हार्डकोर प्रैक्टिस ऑफ लॉ में नहीं जाना, तो आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, मीडिएशन में जा सकते हैं, एडवाइजरी रोल्स में जा सकते हैं, टैक्सेशन में स्पेशलाइज कर सकते हैं। There are many other sub areas, there are even technical areas of law जो आप थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करके आपका नॉलेज ऑफ लॉ उसमें एक बहुत बड़ी एसेट हो सकती है। सो ऑप्शंस तो आपके लिए अनगिनत है, अनगिनत। आपने बहुत एरियाज लिस्ट किए, मैं 1-2 और मेंशन कर देता हूँ। एक है जैग, जज एडवोकेट जनरल कोर, आर्म्ड फोर्सेस में। दूसरा ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में बहुत लॉयर्स जाते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग में, बिल्स इनैक्टमेंट्स में बहुत हेल्प करता है। एडवोकेसी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स वगैरह, NGOs, ह्यूमन राइट्स, इन एरियाज में भी लॉयर्स पाए जाते हैं। ऑल्सो अगर इसको आप एक कंपनी सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशन के साथ कंबाइन करते हैं तो बिजनेस साइड पे कंप्लायंसेस के लिए आपके लिए एक जगह और एक रोल अवेलेबल है। और पिछले सालों में कितने सारे 1000 से ऊपर पुराने आर्केक
एक्ट्स और लॉज को हमने हटा दिए हैं जो हम कंटिन्यूटी में आए हुए थे। अब इनको हटाना या उनके अंदर मॉडिफिकेशंस लाने के लिए आपको नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह है, तो यू कैन बी अ हाई फ्लाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। तो इस तरह का भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। One final question. We've discussed that LLM is not necessary, but for whom is it ideal and who should go for it and how does it help somebody? LLM तब आपको करना चाहिए जब आप कोई भी पर्टिकुलर फील्ड की बारीकी में जाते हैं, और आइडियली आपको तब करना चाहिए जब आपने थोड़ा सा LLB करने के बाद प्रैक्टिस किया, आपके अंदर घंटी बजी कि इसमें मुझे जाना है या मुझे टीचिंग में जाना है या मुझे रिसर्च में जाना है, तब तो LLM बहुत अच्छा है। या फिर ऐसा एरिया, नया कोई एरिया ऑफ लॉ हो ना, रिलेटिवली नया, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह या मैरिटाइम लॉ, जिसका आम कोर्सेज में जिक्र नहीं किया जाता है, तो उसमें अगर आपको स्पेशलाइज करना है एंड यू हैव एन एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड, तब आपको LLM करना चाहिए। और हाँ, एक और सिचुएशन, सपोज आप इंडिया में हैं, आपने अपना BA LLB या LLB इंडिया से किया और आपके दिमाग में कीड़ा है कि मुझे आई वांट टू प्रैक्टिस अब्रॉड। इन दैट सिचुएशन, इफ़ यू डू योर LLM फ्रॉम a country abroad, then your chances of being placed in a law firm in that country improve. So if you are not sure whether you should be pursuing a career in law or not, and if you don't have any other option, I would say do give law a serious thought, because इसकी possibilities बहुत हैं। As an undergraduate course, it's a fantastic course. Yes, 5 years, so what? आपका जो करियर है वो तो डेकेड्स चलेगा, 3 डेकेड्स, 4 डेकेड्स, और तो इन दैट एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स आपने अगर 2 साल और पढ़ लिया तो नो लर्निंग गोज वेस्ट। दूसरी एक बहुत बड़ी बात लॉयर्स के बारे में, कि लॉयर्स डोंट रिटायर। A judge may retire, but a lawyer doesn't retire. In fact, the more experienced you get and the older you get, and the knowledge you have, etc., the court craft that you accumulate, the better you are, the better fee you command, the better kind of clients you get. तो आपके लिए कोई retirement age होती नहीं है। We hope you enjoyed this video, and if you did, please don't forget to like and subscribe to the channel. This video was brought to you courtesy Banav Rachna University.